हाँ जी, विजिबल हूँ मैं। तो शुरू करें। चलो, को आने दो। I'm just waiting कोई और जुड़े। Is the screen visible? देखता हूँ, जुड़ने देता हूँ पहले। हाँ जी, तो शुरू करें। तो आज हम देखते हैं, लेट्स डिस्कस ऑन चाइनास मलाक्का डिलेमा। क्या है मलाक्का डिलेमा? चलो भाई देखते हैं। देखो, आई वुड से इंडिया और चाइना, ये जो सेंचुरी जब स्टार्ट हुई 20th सेंचुरी के एंड में एंड एट द स्टार्ट ऑफ 21st सेंचुरी, ये बोला गया था कि दिस विल बी एशिया सेंचुरी। एशिया सेंचुरी, तो एशिया के दो जाइंट्स इस टाइम जो थे उभर रहे थे। वन वाज चाइना एंड द सेकंड वाज इंडिया। फर्स्ट चाइना जो थी, एक आई वुड से चाइना का जो राइज हुआ, इट स्टार्टेड आफ्टर लेट 70s 80s में। एंड इंडिया का, आई थिंक वी ऑल नो, विद द एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के जो रिफॉर्म्स हुए, विद द dire economic concept, because of the dire economic needs, जब हमारे फॉरेक्स बिल्कुल आई थिंक 2 हफ्ते के बचे थे, 10 दिन के बचे थे, तो इंडिया को एलपीजी रिफॉर्म्स लाने पड़े अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। एंड आई थिंक जिसकी जो स्पीयर हेड किया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। तो वी कैन सी कि दोनों की ट्रेजेक्टरी, इंडिया एंड चाइना की, 20th सेंचुरी से ही राइज अप होना स्टार्ट हुआ। बट अगर आज 2026 की बात करें, तो हाँ, 10-15 साल पहले भी कुछ से कि इंडिया वाज कंपीटिंग विद चाइना, बट अभी जो है चाइना, विद स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आई थिंक चाइना इज डूइंग ट्रमेंडसली वेल। तो वेयर डू वी स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू चाइना इन 2026? आइए थोड़ा इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। इससे पहले आप मुझे बताइए, इज एवरीथिंग ऑडिबल? आपको दिख रहा है? कैन यू गाइस सी मी? हाँ, जस्ट वेट, एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं अपना सारे कनेक्शंस देख लेता हूँ। ठीक है, हम्म, हाँ जी, तो मैं कहाँ पे था, क्या कह रहा था? बड़ा वो सेइंग कि 2026 में इंडिया और चाइना कहाँ पे स्टैंड करते हैं। एंड सारी चीज़ें हम देखेंगे
फिर विल मूव टू चाइनाज मलाक्का डिलेमा क्या है और ये कब से है चाइना को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लेट ड्यूरिंग ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर जो कि रशिया, द फॉर्मर यूएसएसआर और यूएसए के बीच में चल रहा था। उस टाइम पे दुनिया जो थी एक तरह से दो गुटों में बटी हुई थी। वन वाज द capitalism group, and the second was led by the USSR, that is Soviet Union, which was socialist, communist, and ये दोनों गुटों के बीच में जो थी एक तरह से लड़ाई ही चल रही थी। लड़ाई हॉट लड़ाई नहीं थी, उसको कोल्ड लड़ाई कहा गया। वाई? बिकॉज दोनों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स थे, वो जो पूरे प्लैनेट को तबाह कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है को यहाँ से मतलब यहीं से चाइना का राइज भी स्टार्ट होना होता है। तो टू यू नो एज यूएसए चाहता था कि चाइना भी एक काउंटर आए यूएसएसआर के लिए। तो वहां से चाइना ने भी स्टार्टेड यू नो यूएसए स्टार्टेड गिविंग चाइना सम टेक्नोलॉजीज, ट्रेड में उनको काफी सारे इंसेंटिव्स दिए। वहां से चाइना का ग्रोथ स्टार्ट होता है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अब मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया का जैसे मैंने आपको बताया एलपीजी रिफॉर्म्स जब आए इंडिया के, तभी इंडिया की मार्केट्स ओपन अप हुई। और उस टाइम जो था चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, बट इंडिया ने भी किया, पर इंडिया वाज अ लेट स्टार्टर इनटू दैट। तो बाय अर्ली 2000s चाइना वाज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। इंडिया आल्सो स्टार्टेड पिकिंग अप, बट थोड़ा सिस्टम था इंडिया का। सिस्टम आई वुड से सिस्टम क्या, डेमोक्रेसी है इंडिया की, तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ों के रिस्ट्रेन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें का सोचना पड़ता है। इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत दूर की बात होती है, आपको पॉलिसी लानी पड़ती है, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाती है। बट चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना इज अ वन पार्टी स्टेट रूल्ड बाय द सीसीपी, एंड दैट इज ओके, वी ऑल नो दैट्स अथॉरिटेरियनिज्म। एंड चाइना में इफ इट इज गोइंग टू हैपन, देयर इज गोइंग टू बी नो रिस्ट्रेंट। वहाँ पे साइन कर दिया सीसीबी ने, तो वो चीज़ होएगी। वहाँ पे देयर विल बी नो प्रोटेस्ट एंड ऑल दैट, कुछ नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक ब्रिज बनना है, कुछ बनना है, तो बन जाएगा। बट इंडिया में यू नो दैट इंडिया में ये चीज़ें इतनी आसानी से बनती हैं, बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रेंट्स दैट और थिंग्स दैट इंडियंस हैव टू कंसिडर और द गवर्नमेंट हैव टू कंसिडर। सो या अब बात करें अगर चाइना का मलाका डिलेमा जो है, चाइना मलाका डिलेमा है क्या? अगर आप देखें मलाका स्ट्रेट, इट्स अ स्ट्रेट, एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर है बिटवीन द मलेशियन पेनिनसुला एंड द इंडोनेशिया। अब यहाँ से जो है चाइना का 70% ऑफ द ट्रेड यहाँ से होता है। 70%। चाइना इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, और मेनली इसके एक्सपोर्ट्स बिटवीन द टू जाइंट्स होता है, बिटवीन द चाइना एंड द यूएसए। और China is export oriented. Now, I think especially after COVID and Trump's first tariff war with China, with the Chinese, up China has become sort of consumption based economy. It is leading towards it, but still not. So 70% of its trade is dependent on this Strait of Malacca. अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं, if I show you on map, uh, Strait of Malacca map, huh, this is where we will show Strait of Malacca. This is where it is. And okay, ये मैप ना आई वुड से सही से नहीं है, सही से है मतलब इंडिया का, बस इंडिया नहीं दिख रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको, हाँ जैसे ये लेते हैं, दिस इज इंडिया, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलाका, और यहाँ पे अंडमान सी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। यहाँ पे इफ इंडिया builds a military base, और because this is also Indian exclusive zone, Indian territorial waters हैं ये, तो चाइना का जो स्ट्रेट ऑफ मलाका का जो चोक पॉइंट है वो इंडिया के विद इन ग्रास्प है।
अगर मान लीजिए कभी इंडिया और चाइना में वॉर होता है, हो भी चुका है, एंड आगे भी चल के कुछ होता है, तो इंडिया कैन ऑलवेज चोक this point, so that will be 70% of China's trade will be blocked here. These are documented things, 70% or even maybe more. Energy requirements, because China ka sara jo energy requirements hain, they are all coming from East, Middle East, we call it West Asia. Yahan se aa raha hai, and it's all transported through, mainly through seawater, and it goes through Strait of Malacca. And China के जो भी main शहर हैं, be it Beijing, be it Shanghai, even Hong Kong, I would say China का शहर है, ठीक है. It's still on. Hong Kong is an autonomous region, but yeah, sort of Chinese. I mean, Chinese dominated area. Okay, so यहाँ पे these are all dependent on Strait of Malacca. So China का choke point है ये. Even अगर ये चाइना को हमेशा से डिलेमा सताता रहा है, और इसको आई वुड से इसको जो है ओवरकम करने के लिए चाइना ने वेरियस स्ट्रेटजीज अपनाई हैं. वेरियस स्ट्रेटजीज हम आगे चल के इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, बट अभी तक जो आपने सुना है, पढ़ा है, उसके ऊपर कोई डाउट्स या कुछ आपको सवाल है तो बताइए मुझे. इवन इफ यू हैव एनी डाउट्स. आई थिंक अभी लोग जुड़ रहे हैं, अभी और जुड़े नहीं है पूरे. आवाज मेरी आ रही है आपको सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं. आ जाओ भाई, कोई आ रहा है तो आ जाओ. एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी जरूर करें. आपको डीप एनालिसिस करेंगे यार इन सब चीज़ों की, और देखते हैं क्या बनता है ना. आइए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए. आपका ही चैनल है ये, आप ही का है. बढ़ाते हैं कम्युनिटी के तौर पर इसको आगे. और हाँ, पहले चैनल के बारे में अगर मैं बताऊं, बात करूं, तो इसका नाम थर्ड पोल रखा है. मैंने थर्ड पोल रखा है. ऐसा इसलिए है कि थर्ड पोल रखा है. ओके, नाइस है, नाम तो मुझे अच्छा लगता है ये. थर्ड पोल रखा है बिकॉज इंडिया एक, आई एम नॉट सेइंग इट इन डेरोगेटरी टर्म और इन एनी ऑब्जेक्शनेबल टर्म. इट्स थर्ड वर्ल्ड. थर्ड वर्ल्ड क्या था पहले समझते हैं. आइए, फर्स्ट वर्ल्ड वाज, जब फर्स्ट वर्ल्डिज्म इज वेस्टर्न यूरोपियन, American, Canadians, and all this is a white man's world. White man. World was the first world, जहाँ पे modern day democracy first time आई है. After when was USA liberated? I mean independence 1786, I think ऐसा कुछ. हाँ, the first world came into existence. Second world is what? The communist world. The world of the 20th century, when the communism started spreading to the Eastern European countries, to USSR, to even to an extent of China as well. So yeah, second world, that is called second world. And the third world is, especially after the 1940s and 50s decades of the 20th century, when many colonies of the Europeans, especially the Western Europeans, were liberated. इसमें इंडिया भी आता है. इसमें साउथ ईस्ट एशियन, मेनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक Singapore, Malaysia, Vietnam, all these countries come in. This is many African countries, and this is called third world. ये एक तरह से global south we call it. So this is a channel which is based on that, based on third perspective, not first, not second, not right, not left. It is third perspective. That is the perspective of India. Third pole. Pole, you can call it. You can keep it political. Anything you can call it. Third pole as well. Third pole, first pole, second pole, and the third political opinion as well. So that is why, and that is how I named it third pole. Okay. So yeah. This is the gist of the channel, and yeah, और मेरा जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है. एंड बिफोर दैट, उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ.
I'm a student of international relations, political science and international relations, and मेरे को political science में काफ़ी interest है, international relations में, geopolitics में, what is happening around the world, इस सब में मुझे काफ़ी interest है, and इसलिए मैंने ये channel भी start किया है. Let's आज के दुनिया में क्या हो रहा है अभी देखिए, स्पेशली 2026 में it's very very unpredictable, right? The year that has gone so far, even 2025 as well. So yeah, तो इसलिए I just want to share my opinions and things here. Like 2025 में, okay, what was the need to start this channel? I will first discuss that. कि you know that after 2025 there was a lot of, I mean, after, especially after Pahalgam attack, and especially after coming of US President Donald Trump and the rise of MAGA groups, and those racist things that came in with him. So yeah, there was a lot of derogatory comments that were passed on Elon's Twitter on to Indians and India. And after Operation Sindoor, you could see how the Western press started publishing many anti-India articles, giving a different perspective, which is not in line with the ground realities and what is happening. India has been the victim of terrorism from Pakistan side for like 8 decades. Okay, especially after the 90s insurgency. Why I would say 90s insurgency? The Kashmir, the issue of Kashmir since 1947, that was terrorism as well. I mean, the way they've barged into Indian lands, the Kabilas, those the Kabilas of Gilgit, Baltistan, and those tribal people that barged in, that was terrorism. That was terrorism. And okay, I think we are digressing from the topic. Yeah, so that was the need I felt कि India का भी एक perspective होना चाहिए. I mean, there have been many channels for it, India's perspective, but this is my initiative. So I started this third poll, and yeah, putting forward India's POVs, white pilling Indians, because I've seen many people over social media has been black pill, I would say ki they have been, very negative regarding India. Yeah, India has progressed. It might not have progressed as many people wanted it to be, with the speed that many people wanted it to be, but yeah, it has. Or because since it's a democracy, India is a country with 1.4 billion people. It's the largest democracy in the world. I think there have never been a country in the history of mankind with such population, and that is ruled democratically. Yeah, we have ups and downs. We are not perfect, but no one is. The fact is that, and this is how still. Yet I see the commentary that is published for India in the Western media is just ridiculous. It's just too anti-India. Why? Because I don't know, the maybe they can't digest that, yeah, the brown people can have a democracy, a thriving democracy, and still succeed. And yeah, we have our fault lines, we have our problems, everything. But yeah, the Western media, I still remember that. I think it was back in 2014 when India launched Mangalyaan or Chandrayaan. It was Mangalyaan, I think. So in October, I think. Then the New York Times has posted a very racist a very racist cartoon of India joining the space club by knocking on a door with a cow. I mean, that was sheer racism. See, what we had achieved in that mission was we had traveled hundred thousands of kilometers, lakhs of kilometers to Mars with less per kilometer fuel than any other mission or any other space agency had done. It was so, I would say, doable. I mean, yeah, it was an amazing feat for India. Yet the New York Times had published such a
pardon my language, such a racist cartoon for India, and you would see many a times India has been unfairly treated by the Western media. So that's why I started this third poll of giving our opinion. We don't care of what the people or the Western press say about India. That doesn't matter, but we have to stand our ground and we have to put our perspectives. So yeah, like this is what I'm telling you. So during Operation Sindoor, uh, what they did. I mean, they started praising, they started putting forward the Pakistanis' point of views, Pakistanis' agenda. I mean, the Reuters and many other Western, Washington Post, and they started favoring Pakistani narrative. I mean, the reporters were Pakistani, and without establishing any facts on the ground, they started just giving Pakistani narrative over all over the world. Routers and all these organizations did that. And with the rise of MAGA, I was also discussing a lot of anti-India comments, anti-India commentary, anti-India social media things were all over the internet. So that's why I felt my need as an Indian to give forward my point of view, and that's why I started third poll. I don't want to politicize certain things, but yeah, these I think these are the socio-political issues that we have to say. So I don't want to politically politicize certain things, but हाँ, जैसा भी है अब देखते हैं है ना स्टार्ट तो कर दिया है सो या यही दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि भाई इट्स ऑल योर्स आप लोगों का ही है ये दिस इज थर्ड पोल दिस इज ऑल योर चैनल so why not support it so I was discussing China's Malacca dilemma so if you could see on the map here so yeah this is Strait of Malacca, and this, from here, lots of 70% of China's trade goes through. So, if in future some tensions arise between China and India, India has the potential to block this, to give it naval blockade here. We have for that we are also working on building a military base in Andaman Sea, which many political parties and the political leaders are complaining about because of the ecological damage that this could do. But from the security and the defense perspective, I think we have to build a base there. So yeah, because then we will have many things under our grasp. To yeah, to counter this now, this to counter Strait of Malacca, China had also started their जैसे मैंने आपको बता ही दिया where is Strait of Malacca we all know I've shown you in the map और ये साउथ चाइना सी में है। अब चाइना का भी मैं बताता हूँ व्हाट इज चाइना डूइंग फॉर इट चाइना साउथ चाइना सी आप भी आई थिंक आए दिन इफ यू फॉलो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ you would be familiar with the sea that is called South China Sea. यहाँ पे तो साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी कंट्रीज हैं वो सबका ही डिस्प्यूट चल रहा है विद द चाइनीज कोई इधर कुछ देर आर सर्टेन पॉइंट्स 9 dash line which Vietnam claims it, Philippines claims it, Chinese claim it, China तो हर जगह claim करता है अपना because क्यों करता है because China also wants to establish its dominance over this region because China knows कि यहाँ पे भाई हमारा एक बहुत बड़ा चॉकिंग पॉइंट है दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलाका अगर हमने इस रीजन में अपनी डोमिनेंस नहीं करी तो दैट कुड लीड टू मेनी सिक्योरिटी कंसर्न्स तो दैट इज व्हाई चाइना चाइना के इतने क्लेम्स है नहीं इस रीजन में बट स्टिल आर्टिफिशियली इट कंस्ट्रक्ट्स इट एंड बिकॉज इट वांट्स टू have a grip over Strait of Malacca as well. So yeah, one of the reasons for this is for dispute over South China Sea, Strait of Malacca, and यहाँ पे अगर हम बात करें तो China has also started building its blue navy, and I'm forgetting the term. I think blue water navy. Yeah.
सो और चाइना यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना रहा है, नेवल बेसिस बना रहा है अपने कवर्टली, जो भी है। बट या दिस इज द थिंग। और टू काउंटर दिस, ये तो कर ही रहा है चाइना, बट अल्टरनेटिव रूट्स पे भी चाइना अब इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दोस रूट्स। जैसे मैंने आपको बताया, ओवर 80% of China's maritime trade depends on it. 70% of China's oil depends on its supply chains की जो robust है, वो because of this only. Strait of Malacca, global connectivity. China, see, if China wants to connect with Africa, China wants to connect with Europe. I think this is the way. This is the most cheap option for China. Otherwise, the rest would cause a lot of investment capital and all that thing. And यही है चाइना का choking points. It's the economic heartland of China depends on Strait of Malacca. And a control, who controls it, of course, because यहाँ पे after China, which is the biggest military, India, but of course Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia, they all controls it. It's in the, it's such a narrow passage. आप देखिए, I mean इसको अगर choke कर दिया, अगर कोई भी country यहाँ पे goes against China, see China's vulnerability would be exposed. And अगर हम बात करें चाइना ने क्या इसके अल्टरनेटिव निकाले हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। बट इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग, प्लीज फील फ्री टू आस्क। एक बार मैं भी देखता हूँ। आपको मैं एक चीज So China had also started its alternative routes. I mean, started looking for alternative routes or alternative strategies. China, if India wants to contain China through Strait of Malacca, China has also its own plans. So China ने स्टार्ट किया था, अभी भी इट्स थोड़ा सा इंडिया हैज बीन एबल टू काउंटर इट। सो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्टार्ट किया था चाइना ने। चाइना क्या कर रहा है यहाँ पे, छोटे छोटे, इफ यू कैन सी on these maps, China छोटे छोटे ports बना रहा है। There was this quite famous incident of Hambantota port that Sri Lanka has leased to Chinese for 99 years. China has started building bases in Maldives. यहाँ पे there's this port of ग्वादर या ग्वादर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। सी आप देखेंगे तो यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे चाइना है, एंड चाइना म्यांमार में भी आ रहा है, एंड चाइना जिबूती में भी है। चाइना ने जिबूती में भी एक भी मिलिट्री बेस बनाया, नेवल बेस बनाया अपना। सो या चाइना भी उन सब पॉइंट्स पे जा रहा है फ्रॉम वेयर इट कैन चोक इंडिया। So this is a great strategic battle that has been going on since decades between India and China. And China ने एक बहुत ही ambitious, capital heavy, intensive plan बनाया था, that is CPEC, China Pakistan Economic Corridor, which tried to bypass the Strait of Malacca Dilemma. वो क्या करता है, China has planned कि from
Xinjiang, which is a Muslim dominated area of China, वहाँ से एक कॉरिडोर बनाया through highways and road connectivity that connects to Gwadar port in Karachi, Pakistan, and वहाँ से it can bypass Malacca. So इन्होंने एक heavy capital intensive plan बनाया था which passes through POK, that Pakistani occupied Kashmir part of India, Gilgit Baltistan. From there, it passes through Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh, Balochistan. यहाँ से इन्होंने सारा ही पाकिस्तान के साथ मिलके सीपैक बनाया. It was, I think, Xi Jinping, that is who is the president of China. उसका काफी ड्रीम प्रोजेक्ट था. But you know, चाइना ने यहाँ पे गलती कर दी. चाइना को लगा कि पाकिस्तान विल बी अ गुड पार्टनर, गुड स्ट्रेटेजिकल आई फॉर इट, बट पाकिस्तान के तो बस का कुछ है नहीं, राइट. तो या जब यहाँ से कॉरिडोर स्टार्ट हुआ है, इंडिया ऑब्वियसली ऑब्जेक्टेड टू इट बिकॉज इट वाज पासिंग थ्रू द टेरिटरी दैट वाज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तानीज, and in China never asked for India's permission for it. So yeah, so this was this now this CPEC is operational, but it came at a great cost. There was a lot of protests against it. The threat, the instability of in Pakistan was a primary concern for the CPEC viability, because I think यहाँ पे terrorist attack from TLPs, Taliban, and Balochis, because उनके resources extract करके they are just giving to Pakistani Punjabis and Chinese, और वहाँ पे सारी ही एक तरह से demography भी, I mean demography तो नहीं, but lot of Chinese people were coming in, and China ने इतना सारा डेट दे दिया है पाकिस्तान को, बिकॉज ये प्रोजेक्ट वायबल थे नहीं, बट चाइना पाकिस्तान अब चुका तो पाएगा नहीं, चुका भी नहीं पा रहा है, एंड उनको वायबल रखने के लिए इट कीप्स ऑन गिविंग देम लोन, एंड पाकिस्तान कीप्स ऑन गिविंग इट्स लैंड टू चाइना, और एक तरह से कॉलोनी ही बन गया था चाइना की पूरी पाकिस्तान. तो ये पोर्ट ग्वादर पोर्ट तक जाता है, एंड यहाँ से चाइना कैन ट्रेड विद मिडिल ईस्ट, ऑयल एंड एनर्जी, एंड यूरोप एज वेल. सो चाइना ने and ये जो CPEC था, this was a part of a broader initiative, that is Belt and Road Initiative, which was earlier known as one road one belt, OROB, something like that. तो उसी का पार्ट था Belt and Road Initiative का ही पार्ट था CPEC. So Belt and Road Initiative is a broader initiative taken by Chinese, and these are all pet project and dream projects of Chinese President Xi Jinping. So yeah, the BRI, I mean, it's an initiative taken to bypass the Strait of Malacca का जो dilemma है China का. So BRI was pre-2020, तो ये काफी सारे मतलब viable, China was selling it like hotcakes कि हाँ, this is China's rise, and please this, I mean please, so नहीं, it was an alternative for, it wasn't built on the to replicate the old Silk Route which was connecting China to Europe, to Arab world. So China ने काफी सारे देशों को, even Central Asians, Europeans, Africans, Arabs को loans दिए कि we'll build the infrastructure, we will build everything, because China is the new future, China is the greatest market that has ever been, ये वो, and please invest into it, we'll build it, we'll build you ports, and you will get an access to the largest market of Asia, China, all that. तो but चाइना ने इतना ओवर एम्बिशियसली ये चीजें सेल कर दी कि भाई वायबिलिटी तो थी नहीं इन प्रोजेक्ट्स की, बिकॉज कोस्ट इतनी ज्यादा है, एंड चाइना, आई टोल्ड यू, चाइना इज अ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट. कंजम्पशन चाइना का, इट्स ऑल डिपेंड ऑन एक्सपोर्ट्स.
So you could see कि Italy even joined it, but then they saw it कि ये तो viability है नहीं, and China debt trap में फंसा लेता है. A classic case of it is Sri Lanka and Maldives. श्रीलंका बीच में चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था काफी, एंड देयर वाज लॉट ऑफ एंटी इंडिया सेंटीमेंट दैट वाज ब्रूइंग इन श्रीलंका एज वेल एज इन मालदीव्स. आई थिंक मालदीव्स में गो बैक इंडिया या इंडिया बैक ऐसा कुछ प्रोटेस्ट भी चले थे. इवन बांग्लादेश वाज अंडर द was getting under the influence of China. So yeah, ये सब चाइना के इनिशिएटिव थे to bypass the Strait of Dilemma and contain India through string of pearls through Indian Ocean, and India के ऊपर से आप सी पैक चलाएंगे. So these were China's initiative to counter India, and India has also started its counter string of pearls policy. Also, India has also started building ports. India is in Sitwe port, I think Burma में बनाया है. India is getting in close touch with the Taiwanese, and इस पे भी करते हैं बात. But let me first get some comments and some कुछ अगर आपका आया है तो. So yeah, I hope you guys are okay with it. If you have any doubt even after watching the video, please don't forget to comment and don't forget to subscribe, share and like. अगर आपको कुछ भी सवाल है तो बताइए मुझे, किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर. We can talk. This is a community, yeah guys. Why not support each other? इंडिया की भी एक sort of voice मिलेगी. And this can be a platform to build your voice, to put forward Indians' point of view, right? Because भाई हम क्यों से हैं, हम क्यों किसी और का narrative ले? Why not build our own platforms, right? So yes. और अभी अगर बात करें जैसे lots of there's lot of things going on, in the geopolitical realm. See, I think I was just reading news yesterday. Was a day before कि China and Turkey का military weapons aircraft were landed in Pakistan. I think maybe something is brewing, and there's also talk of, I think, Islamic NATO, that is Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan is joint hands. That attack on one will be attack on all of us. So India, to counter this, India is also started. I think, um, yeah, we have a policy of not getting into military alliances. We have never been in a military alliance with anyone. We have been on strategic autonomy or non-alignment. But I think now the needs are there. So India has also started its increasing its relations with the Greece that has dispute with Turkey, Cyprus as well, and so India is also in touch with certain nations, Armenia as well. So we have also started selling BrahMos, I think, to Philippines, if I'm not mistaken. And yeah, I think Cyprus or Greece. I think Greece is really interested into Tejas and BrahMos. So yeah, I think BrahMos military. See, one of the best things that happened during Operation Sindoor was we did not rely on any foreign much of the foreign weapon inventory. BrahMos was really used really well. I mean, Pakistan knows ki BrahMos kya hai. I think, and Akash missile as well. The air defense systems that we depended on were all indigenous. So India's defense make in India got a really good endorsement and boost because of Operation Sindoor. So yeah, I think a lot of things are happening and taking place in the global security arena. Lots of things. You can see the
Israeli, Iranian, and the American conflict that was really unnecessary by the Donald Trump. I don't know what was he thinking कि भाई come on, इसने तो दुनिया को बिल्कुल हिला के रख दिया है डोनाल्ड ट्रम्प ने. Since the world has been more unpredictable, the way it is going, I think every country is now realizing those who were under the um, American establishment security umbrella have started to realize that America is not a reliable partner or even competent partner for that matter, because lots of missiles were काफी सारी मिसाइलें छोड़ी गई हैं यूएस के बेसिस पे इन द मिडल ईस्ट एंड अमेरिका हैज बीन एबल टू डू nothing. And see, there's obviously now I think Japan is rethinking its security arrangements. Even South Korea, for that matter, has been trying to distance itself from American security umbrella, but they have been for decades they have been under quietly. They have been quietly, काफी सारे उनका मिक्स हो रखा है. It's very hard to disentangle themselves from American security umbrella. I mean, इसका सबसे बड़ा glaring example was when Donald Trump threatened to take over Greenland and from a NATO ally Denmark. I mean, so Europe has also realized that it's not wise to depend on US's military support. So yeah, so you can see there is decline in US hegemony. What I think from last decade or so हो ही रहा है, but Donald Trump has really catalyzed it, because abhi iske Donald Trump might not realize the consequences of his actions, but later it will be really a death blow from American empire, Americanism, Pan America. So yeah, we'll talk on these issues later. So I think यहाँ पे आपको मैंने बता दिया China's Malacca Dilemma and what were its alternatives for its CPEC Gwadar port, Belt and Road Initiative, China Myanmar pipeline. China has taken many alternatives, but see देखते हैं कितना successful होते हैं या नहीं होते हैं. I mean, yeah, of course, BRI has been unsuccessful. ये failed project है, CPEC has been failed, but क्योंकि State of Malacca का इनको कोई मिल ही नहीं रहा है. Alternative viability of all these projects is gone to waste. So yeah, देखते हैं क्या होता है भाई. China wants to be superpower, but like America, but they can only be one superpower, na? So yeah, America has been blessed by geography. There's no enemy in the vicinity of China, in the vicinity of USA, but China is surrounded by giants like India, Japan, even Russia. Abhi to काफी, I mean, Russia, because of its own actions, is now dwindling, but it has borders. China has border with 14 states, right? 14 states, I mean countries, and USA has borders with only with two. That is Canada and Mexico. Canada is just like Donald Trump says, 51st state of USA. But of course, there has been no friendlier countries than USA and Canada, and Mexico is of no threat to USA. So yeah, that's how American exceptionalism work because of its geography. But China is not blessed with the geography. So will it be an undisputed hegemon of the world? I don't think so. Not in the near future. Not as long as USA and other middle powers are there. So yeah, I think आज के लिए इतना बहुत है. I will end my stream here and मिलते हैं एक और live के साथ. We'll talk on many other issues that's taking place in the security and geopolitical arena. So till then, okay, bye bye and stay well.